दादा श्याम साधु वासवानी सेंटर चेन्नई जे पारां नाचीस जवाहर कोटवानी देश विदेश में असांजूं प्यारियूं माताऊं, प्यारा बुज़ुर्ग, प्यारियूं भेनरूं, प्यारा भाउर, नौजवान साथी ऐं नंढड़ा गुलड़ा ॿार, तव्हां सभिनी जे कमल चरण ते सर झुकाए करे दादा श्याम। साधु वासवानी सेंटर चेन्नई 1 अगस्त 2020 ते ही ऑनलाइन जो सफ़र शुरू कयो ऐं 1 अगस्त जेको 2 अगस्त अगले ॾींहुं दादा जो बर्थडे हूंदो आहे, उन ॾींहुं दीदी जो मैसेज हुयो, उतां खां ही ऑनलाइन जो सफ़र शुरू थियो ऐं उन ऑनलाइन सफ़र खे अॼु 26 मार्च 2022 क़रीबन 20 महीना पूरा थिया। इन में क़रीबन मोर देन 120 जे आसपास एपिसोड्स थिया आहिनि। इन ऑनलाइन जे सफ़र में, वर्चुअल सत्संग जे सफ़र में देश विदेश में प्यारे दादा खे, उन जी एक्सटेंडेड फैमिलीअ खे असां जेको मिलिया आहियूं, असांजे अनसंग हीरो, असांजे मिठड़े दिलबर प्यारे दादा, उन जा केतिरे ई महिमा गुणगान ॻाइण वारा स्पीकर्स, सोलफुल भजन ॻाइण वारा, सुहिणी आवाज़ वारा असांजा संगीतकार, गायक, उहे असां सां जुड़िया। उहे दादा जा अजूबा, कारनामा, उन्हनि जा मिरेकल्स ॿुधाइनि पिया। असां दंग रहिजी वियासीं असांजे प्यारे मिठड़े दादा जूं मिठड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधी करे। सभिनी पंहिंजे दिलि जे अरमाननि में जेकी दबली हुई, उन में जेके दादा जे लाइ यादियूं हुयूं, उन्हनि मेमोरीज़ खे असां सां शेयर कयो। तव्हां चवंदा मां अॼु इहो छा ॿुधाए रहियो आहियां, त मां तव्हांखे ॿुधाए रहियो आहियां त हर ॻाल्हि खे किथे न किथे हिकिड़ो विराम थींदो आहे, छाकाणि त उन विराम सां असां बाय बाय न कंदा आहियूं, पर हिकु वरी नई शुरूआत थींदी आहे, नए मिलण जो हिकिड़ो प्रयास थींदो आहे। अॼु साधु वासवानी सेंटर चेन्नई बराबरि 20 महीननि खां पोइ दिस इज़ द टुडेज़, हिन सीक्वेंस जो, हिन सीरियल जो, हिन चेन जो अॼु जो ही आख़िरी एपिसोड आहे, जंहिंमें असां तव्हां सां गॾिजण वारा आहियूं ऐं तव्हां असां सां गॾियल आहियो, तव्हांजूं आसीसूं मिलंदा आहियूं। दादा केतिरो ई चवंदा आहिनि भई घटि ॻाल्हाइजे, अल्प बोलणे, अल्प घटि खाइजे, घटि ॻाल्हाइजे। त हिन 20 महीननि में जेतिरो असांखे दादा जूं शिक्षाऊं, उन्हनि जूं सिख्याऊं, दादा जा असां केतिरा ई मैसेज ॿुधासीं। सॼो विश्व चेन्नई सेंटर लाइ एतिरी आसीस कंदो आहे। मां अॼु जो इहो एपिसोड डेडिकेट थो कयां सभिनी प्यारे दादा जे दिलबरनि खे, दादा जे दुलारनि खे, दादा जे श्रद्धालुनि खे, दादा जे संगत खे, छाकाणि त 20 महीना प्यारे दादा जी आसीस सां ई तव्हां सभु देश विदेश में असां सां जुड़ी करे साधु वासवानी सेंटर चेन्नई खे आसीस करे रहिया आहियो। बाक़ी मां तव्हांखे अॻियां हली ॿुधाईंदुमि। अॼु इन सुहिणे आख़िरी एपिसोड जी शुरूआत था कयूं उन सुहिणे प्रोटोकॉल सां। सभ खां पहिरियों असांजे कृष्ण जो जेको गीता जो श्लोक थींदो, तंहिंखां पोइ आरती थींदी ऐं उन खां पोइ नूरी ग्रंथ जो वचन वठंदासीं। मां चाहींदुसि सभु असांखे साथ ॾींदा। दादा श्याम। Srimad Bhagavad Gita, chapter the 12th, shlokas 13 to 20, translated from the original Sanskrit into English rhymed verse by Gurudev Sadhu Vaswani. The Blessed Lord said, "Who hateth none, from self is free, in pleasure pain has poised mind, and is compassionate and kind. My best beloved saint is he, who dedicateth unto me his mind and reason, is content, controlled, his life still in me blent. My best beloved saint is he, who harms no bird nor beast nor flea, and doth not feel disturbed here by any, and is freed of fear. My best beloved saint is he, who nothing wants, doth work for me,
yet is from work detached, serene, well balanced, unperplexed and clean. My best beloved saint is he, who fixed in faith and love on me, doth dote on me, yet scorneth none, and fruits of labour all doth shun. My best beloved saint is he, who is alike in pain and glee, in fame and shame, in cold and heat, to foe and friend in strength defeat. My best beloved saint is he, who bears blame, praise, is passion free, who homeless is and firm in mind, in silent love who life doth find. My best beloved saint is he. They who this nectar drink of me, and know the law that giveth life, and cling to faith away from strife, my best beloved saint is he. Om Tat Sat. Thus endeth chapter the 12th of the Bhagavad Gita, entitled Bhakti Yoga, or the Yoga of Devotion. जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, बोलो जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। चरण कमल में सिर निवाऊं, उठत बैठत महिमा गाऊं। तू शिव शक्ति, तू घनश्याम, तू ही है दिल दिल का धाम। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। तू ही पिता, तू मेरी माता, तू भगवंत आनंद दाता। सत्य स्वरूप तू मेरे स्वामी, तू सर्वज्ञ अंतर्यामी। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। ज्ञान और ध्यान तू मेरी युक्ति, तेरे चरणों में मेरी मुक्ति। तेरे दर पर मांगे दूध, दासी अंजलि कीजे कबूल। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। बोलो जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। दादा श्याम अंजलि संग्रह जो वचन सुफो 515 कर सफर सजायो। छड निंद निदोड़ी, उठ जाग प्यारे। वे रात गुजरी सिज प्यो निहारे। उठी कर ए प्यारा सफर ही सजायो। मिलियो जन्म दुर्लभ न कुछ तो कमायो। तुझो धन दौलत ही मिल्कियत माल। अथे कूर दूर काहे प्यो काल। उठ जाग प्यारा
छॾ गफ़लत जी ॼाण संतनि जे चरणनि ही मनड़ो विहार उथी जाग अंजलि थी तुरत तयार उथी ओठ अखियुनि में खुदा लाइ खुमार। दादा श्याम। दादा श्याम साधु वासवानी सेंटर चेन्नई जे पारां हिकु दफ़ो वरी देश विदेश में सभिनी संगत जो स्वागत। दादा श्याम, अॼु सभ खां पहिरीं मुंहिंजे मन में हिकु अनाउंसमेंट जी इच्छा थी थिए त तव्हांखे ॿुधाईंदे ख़ुशी थी थिए, साधु वासवानी मिशन जे आउटसाइड जेको पहिरियों सेंटर खुलियो उहो साधु वासवानी सेंटर कोलाबा मुंबई जो आहे, जंहिंखे पूरा 70 साल था थियनि पिया, ऐं बांद्रा सेंटर जंहिंखे 12 साल थियनि था पिया। असांजी मुंबई जी मिठड़ी प्यारी संगत, असांजा उतां जा सभई असांजा बानीगार साथी सभु गॾिजी करे इन उत्सव खे 70 साल जेके कोलाबा सेंटर जा थिया आहिनि, 12 साल जेके बांद्रा सेंटर जा थिया आहिनि, उनजे उपलक्ष्य में मुंबई जे साधु वासवानी मिशन उन्हनि हिकु सुहिणो प्रोग्राम रखियो आहे। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदे ख़ुशी थी थिए त तव्हीं 30 तारीख़ ते नेशनल कॉलेज ऑडिटोरियम में शाम जो 6:30 बजे अची जमा थियो, जिते असांजी मिठड़ी प्यारी दिलबर दीदी बिलवड दीदी कृष्ण कुमारी उन्हनि जो मैसेज तव्हीं ॿुधंदा, ऐं असांजी भेण काजल ऐं असांजो प्यारो भाउ सरल इहे ॿई सोलफुल सिंगिंग सां प्रभु सां तव्हांजी तार जोड़ींदा, अंजलि ऐं नूरीअ जा भॼन ॻाईंदा। हिकु दफ़ो वरी इन पोस्टर खे तव्हां ध्यानु सां ॾियो, ऐं मुंबई जे लाइ ॾाढी वॾी ख़ुशख़बरी आहे, उन्हनि खे ॾाढियूं खोड़ खोड़ वाधायूं। 70 साल ऐं 12 साल इन सेंटर में दादा जे चरण से समर्पित थी करे हिन सेवा कई आहे। दादा श्याम। प्यारियूं भेनरूं, प्यारा भाउरो, अॼु 20 महीना थिया आहिनि असां साधु वासवानी सेंटर चेन्नई जे पारां एंकरिंग कंदा आहियूं, सूत्रधार थी करे तव्हां असांखे ॾिसंदा आहियो, पर सचमुच इन जा सही हक़दार साधु वासवानी सेंटर चेन्नई वारा आहिनि, जेके असांजा ग्वालाणी साहब आहिनि, मुकेश भाऊ आहिनि, बैरवाणी साहब आहिनि, एंड बिहारी भाऊ आहिनि, शक्ति दीदी आहिनि, केतिरा ई ॼणा आहिनि जेके मां तव्हांजा नाला ॿुधाईंदुमि तव्हां चवंदो इहे कंहिंजा नाला आहिनि, पर इहे बिहाइंड द सीन उहे पिलर्स आहिनि साधु वासवानी सेंटर चेन्नई जा, जिन 20 महीना लाॻीतो इन वर्चुअल सत्संग खे एंड इन ऑनलाइन प्रोग्राम्स खे ॾाढो पंहिंजो दादा जे चरण में समर्पित कयो आहे। अॼु इहो आख़िरी एपिसोड आहे, ऐं इन एपिसोड में तव्हांखे मूंखे ॿुधाईंदे ख़ुशी थी थिए, हींअर मां आमंत्रित करे रहियो आहियां असांजी न्यू जर्सी जी प्यारी भेण, जेकी तमामु सुहिणी एंकर आहे, ॾाढी मिठड़ी आवाज़ अथसि, ऐं दादा जी हुनजे मथां खोड़ खोड़ आसीस आहे। जंहिं वक़्तु बि असां ॿई गॾिजी करे इन सफ़र में कॾहिं एंकरिंग असांजी किरण आहूजा दीदी कंदी आहे, कॾहिं मां कंदो आहियां। अॼु हिकु स्क्रीन ते तव्हां असांखे ॿिन्ही खे गॾु ॾिसंदा, जेकी असांखे दादा सौभाग्य ॾिनो आहे, जेकी सेवा जो मौक़ो ॾिनो आहे, त मां हथ ॿधी करे आमंत्रित थो कयां असांजी ग्रेसफुल किरण दीदी फ्रॉम न्यू जर्सी। Dada Sham, Jawahar Bhaiya. दादा श्याम, किरण Dada दीदी। Sham to everyone. It has been a very interesting journey for me also. And Jawahar Bhaiya na saal mein ta minji bhi promotion thi wai. Saal पहिरीं मां तव्हांजी गेस्ट हुअसि, पोइ मूंखे होस्ट ठाहियो, ऐं अॼु ॾिसो असीं ॿई स्क्रीन ते गॾु आहियूं। ॾिसो दादा तव्हांजो कीअं प्रमोशन कयो आहे, चवंदा आहिनि जंहिंजी सची समर्पित भावना हूंदी आहे, जंहिंजी सची लगन हूंदी आहे, पर दादा हुनखे पाण ई चवंदा आहिनि न, गुरू पाण ई छिके वठंदा, शिष्य जो दम न आहे। बिल्कुलु, ऐं मुंहिंजे केस में ॿियो कुझु कान्हे, रुगो दादा जी महिर आहे। पर हींअर असांखे जवाहर भैया प्रोग्राम वधाइणो आहे, छो जो असांजा ख़ासि गेस्ट स्पीकर असां सां गॾु आहिनि। दीदी मां ऑन द वे मां पाण चाहियां थो त जेको अॻियां जेको सफ़र आहे, जेके असांजा अॼु जा सुठा स्पीकर आहिनि, छाकाणि त असां 20 महीननि में तमामु सुठा स्पीकर्स दादा जूं अहिड़ियूं अनसंग ॻाल्हियूं ॿुधियूंसीं, त मां रिक्वेस्ट थो कयां तव्हांखे, एंड प्लीज़ उन्हनि खे तव्हां आमंत्रित कयो, ऐं मां बैक स्क्रीन थो वञा, वरी मां तव्हां सां जुड़ंदुसि। Perfect. Thank you दीदी। दादा श्याम। Dada Sham. The last few years have been exceptionally challenging for the whole world. But
Thanks to technology, we've been able to stay in touch with our dear ones, with our loved ones. And thanks to platforms like these, we get to connect with people from all around the globe. I particularly can speak for myself and say I have met some truly amazing, wonderful souls who I probably would have missed out on if it wasn't for this platform. Dada traveled so extensively throughout, and his love, his compassion, his kindness, his empathy, and his extremely radiant smile touched and transformed many a hearts, many a lives. Our guest today, Mr. Shiv Khemka, is an addition, or should I say, one of the many, many admirers of our beloved Dada. Shiv, I'd like to extend a very warm-hearted welcome to you today. In spite of your very hectic schedule, you are with us today to speak to us about Dada. And I think that says a lot about Dada and you. Thank you so much for joining us. And I'm very happy to speak to you today. Thank you so much, Kiranji. Dada Sham. Dada Sham. Dada Sham. So Shiv, I'm always curious to know about how people meet Dada, how they came, what drew them to him. He has many qualities, but there's always something special that touches each one of our hearts. So let's begin our conversation today with you telling us about you meeting Dada. So it's a strange story because when I was maybe 30 years ago, my mother gave me a small pocket Gita, which I always carried with me through my education, through my travels, through my work. And the foreword to that Gita was written by Dada Vaswani. And I read the foreword many, many times. But I wasn't sure who Dada Vaswani was. But I found the foreword very deep and very moving. And one day I was in Washington, D.C. at a conference where I was meant to be speaking. And on the conference program, it said, presentation or conversation with Dada Vaswani. And so I asked the organizers, look, is this a spiritual person? And they said, yes. And I said, it can't be the same because I've been carrying this with me 30 years. It can't be the same person. And so I canceled my trip. I stayed on an extra day to sort of to hear Dada Vaswani. And really, it was from listening to him for the first time, I realized I was deeply blessed. And it was really like falling in love with a very enlightened, loving, kind, and gentle person. So I then canceled my trip again, and I met with him twice in Washington. And then I became a Dada groupie, following him around the planet, wherever I could. That's actually a very good word that you used, because that's what I think we all are. And it's quite fascinating that he seemed to have attracted each one of us and put together this wonderful garland of his admirers from every walk of life. So there's so many qualities to Dada that we can't really put it in words, and I personally cannot, list them. But there's always something that draws each one of us. Like for me, the love, the way he welcomed me was as though he knew me for such a long time and he was waiting to see me. So what was it that you felt when you first saw him? Because when you fall in love with someone, there's something that draws you to that person. So what was it? For me, it was his incredible authenticity, genuineness, and his overflowing love, compassion, and his incredibly deep wisdom, and at the same time his incredible humility. I'd say that really stood out. He was such a humble person, and not just fake humble, but deeply humble. Yes. And it was just an incredible thing to meet someone like that, and just the radiance of Dada's personality. I don't think anyone could resist Dada, to be honest. So I don't think I'm very special in that way. That's true. Light, like anyone. Yeah. I think we were all just drawn to him like moth to the flame. Yes. like bees to the honey, or whatever suits you. But so what happened next? Tell us. Take us through your journey with him.
No, so I, then kept in touch. I met him. I went to Pune. I, attended something in the US when he was there, and I just tried my best to keep in touch with him. And he was always extremely kind and extremely generous of his time, extremely generous of his, his affection, and we felt really like his children, and Yeah. he made us feel so welcome all the time. And my whole family fell in love with him, to be honest. We were very, very blessed. We met him many times and had the benefit of sitting at his feet, listening to his wisdom. And, we are eternally grateful. And he really is with us all the time. I Yeah. don't even say he's not there. He's now with us all the time. I think a little more closer, and yeah. Yeah, he's with us all the time. Yeah. No more barriers. It's a direct Yes. connection now to him. Yes, absolutely. So yesterday, when we spoke, you mentioned a couple of different incidents. One was the concert, and one was the meeting with the Pope. So why don't you Yes. tell us a little bit about it? Because I myself didn't know anything about that. So please. Yes, sure. No, so in 2016, we had a concert, Global Citizen India, where we Yeah. had Coldplay, Jay-Z. Our foundation organized the concert. The young people in our foundation, young leaders that believe in ethical, altruistic leadership, Okay. you know, organized this concert to raise funds and action to help solve the SDGs, to work towards the Sustainable Development Goals of the United Nations, numbers 4, 5, and 6, education, gender equality, and water sanitation and hygiene. Wow. And Okay. when I mentioned that to Dada, and I said, Dada, we would love to have you come and speak to all these young people. We'll have 100,000 young people there. Wow. Without hesitation, he said yes. And I wasn't sure if he would. And then, just before the event, Krishna Didi said, he's not feeling very well, and so on. I said, look, I understand completely. But then I get a call back saying, no, he's coming. He's going to be there. So I was deeply touched. And Dada spoke to the young people, 100,000 cheering and chanting young people who wanted to see Coldplay and Jay-Z. And when Dada Wow. got on stage, there was total silence. And they Wow. listened to him and his wisdom and his beautiful words. And it was a beautiful way to bless that event, which went on to raise over $6 billion in commitments. And, That's a lot of money. a lot of things, and helped in many ways, and really started the global citizen movement in India. So it was really a very blessed moment for us to have him come and attend and take the trouble. Yeah. And then of Yeah. course, we saw him in Mumbai, and we spent a little time with him there as well. And then sometime later he said, I met the last Pope. I'd like to meet this Pope as well. I think he's a special person. And I immediately took on the opportunity to write to my friends in Italy. And I knew someone connected to the Vatican, and I wrote to them, and very quickly I got a letter back saying, yes, please come. Wonderful. His Holiness would love to meet Dada. And so we organized, the visit to Rome, to the Vatican. And it was one of the most beautiful experiences of my life, because when we arrived at the Vatican, I thought the meeting would be one-on-one in some private room or something like that. But as happens in these systems, there's a big protocol around meeting His Holiness the Pope. And so they took us and they put us on a chair outside amongst 100,000 people. It was a chair right at the front. Right. It was kind of the first corner chair, Yeah. which is meant to be kind of most prestigious chair. But at the end of the day, it was with 100,000 people outdoors on a sunny day in October 2017. And I just felt Dada wasn't getting enough. He'd come all the way at, such an advanced age. He'd made such a long trek. Yeah. And I just felt that he should be seen inside, indoors, and then Dada turns around, holds my hand and says, why are you anxious? And I said, and before I could say anything, he said, you shouldn't be anxious, because it's one of two things. Either he's a normal human being like one of us,
The fact that he compared me to him immediately, I was like, which us are you talking about? Yeah, exactly. He is you. He said, I think he's just a normal human being like one of us. In which case, it doesn't matter if we meet him for 1 second, 10 seconds, or whatever. It'll be nice to meet him and so on. Or on the other hand, he is a very saintly being. And if he's a very saintly being, he will be very humble. You cannot be saintly without being humble. Yeah. And if he is a saintly being, he will give us as much time as we need with him. And so don't be anxious, don't worry. So immediately he calmed me down and could have brought me down. And that moment was such a kind of blessed moment. And then His Holiness the Pope came towards us across the mound of St. Peter's. And, he came and he met with Dada, and, they exchanged a few words. I tried to explain who Dada was and said that, he's a great saintly being. And then Dada presented him with a book on Jesus that he'd written, which His Holiness accepted very graciously. And then, His Holiness said, "Are you from Kerala?" And he said, "No, I'm from Pune." And then Dada said, I have come to give you a message. I have come to talk to you about something specific. And he said, we must work on a new education. We must work on a new education of character. And we must work on a new education of character in two places, in schools and in families. And His Holiness the Pope listened to him and listened again and said, in families, in schools. And he said, I completely agree with you. Please pray for me. Please pray for me. And then Dada said, I seek your blessings. And then Dada reached down to touch His Holiness's feet. And I said, he's reaching down to touch your feet, Your Holiness, to ask your blessings, to show respect. And immediately, His Holiness the Pope immediately reached down to touch Dada's feet. Oh my God. In front of 100,000 people, not caring. It was like two brothers in love with each other, meeting after a long time. And this was a very spiritual connection. And nothing else existed except these two people who were both spiritual and saintly, connected to each other and just looking at each other like brothers in love with each other. So I was very touched. And then they spent, 4 or 5 minutes together. And then His Holiness, said, please pray for me, pray for me. And Dada said, bless me, bless me. And then His Holiness walked on and, I touched his feet. And then he left. And he spent maybe 5 seconds with everyone else, or 10 seconds or 15 seconds, having spent, as much time as Dada needed with him. So it was a very beautiful, beautiful occasion. And I was very blessed with Krishna Didi to witness it. Yeah. And I just feel, people say, oh, so you took Dada to see His Holiness. I said, no, he took me. True, I agree. Holiness. Yes. He decided to take me along. And then we met with some other people. We met with some students. We met with some other people in Rome. And Dada always collected lots of people around him. Yeah. And he gave so much love and warmth and kindness to all of them, and sort of, calmed their minds and the disturbance they all have, and brought peace to them. And it was a beautiful thing to see. So it's really lovely. He actually had that impact on all of us. When he would come home, it was suddenly like life was the most beautiful. Yes. And there were no care in the world. And Absolutely. everything was as wonderful as it could be. So I can imagine the impact he must have had on the other people around him too. There was a serenity to him. The moment he walked in, it was like, okay, I can breathe now. It's all good. Life is good. Absolutely. Amazing. But thank you so much for telling us about that experience with the Pope, because I had seen pictures, but I wasn't aware of all of this. And I'm sure everyone who's watching us today, has joined us today, is very grateful to you for sharing that with us, because there is so much to Dada that we barely scratch the surface. And, sitting with all the wonderful people, I have an opportunity to speak to people before we have our conversations online. And I get to hear so many wonderful things from everyone. You're very lucky. I'm very fortunate. I can't tell you. Very, very fortunate. And I'm very grateful. For me,
you mentioned Coldplay and Jay-Z. The fact that Dada shared a platform with such artists from a very different world, a very different genre of music, which I think is still relatively, I won't say new, but it's a budding genre for India. But the fact that he sat with, he shared that platform and he was just, he blended so beautifully wherever he went. It just didn't matter who else was there. And the fact that you all raised such a large amount for the cause is absolutely brilliant. I mean, it's such a transformation for so many lives around the country. I'm sure you've had many experiences with Dada. This was what you shared with us was something that happened before everyone. Are there some personal moments with Dada that you'd like to share with us and tell us? Yeah, no, there's so many moments. How long do you have? Well, listen, I can listen all day. So But just tell us, one of the first moments I shared with him, which I realized what an incredible person he was he was talking about self-control and willpower. And I remember I went to see him afterwards, just quietly, and just asked him, just a few people around, and I said to him, Dada, you talk about willpower. How does one build willpower? How does one build willpower? And Dada looked at me. He had that look sometimes where you weren't sure if he'd heard you, you know. So Yes. Yeah. I was about to repeat, and before I could repeat, he turned around and said to me, self-denial. Okay. And then he turned to the next person to answer the next question. And since then, in the last 10 years or so, I've asked hundreds of my friends, hundreds, how do you build willpower? The most intelligent people, PhDs from the best universities in the world, children, everyone. I've asked people, how do you build willpower? And every single answer I get is a long, drawn-out answer of multiple sentences about how you have to commit, you have to be intentional, you have to do this. And the beauty of Dada's answer was it was so succinct, but captured in it everything you need to know about how you build willpower. He just said 2 words and then turned on to answer other questions for other people. So he was a person of incredible depth, incredible wisdom, and incredible understanding about this life we are all gifted with. And so it was a very beautiful thing. I remember asking him once, because forgiveness was a very big thing for him, especially on his birthday when we, observed 2 minutes of silence for forgiveness. Yes. And I said to him once, I said, Dada, what if I can't forgive someone? And he very compassionately looked at me and said, then forgive yourself for not being able to forgive them. And who says that? Yeah. And it just suddenly calmed all the chaos with it. Of course. It's so beautiful. Yeah. Extremely. Yeah. So tell me, where did you take this aspect of self-denial? Because I'm curious to know, because you said self-denial. Question. So during the COVID period, I took Maun Vrat every Sunday for 18 months. Every Sunday I wouldn't speak. We don't realize, but speaking is something that we are all so accustomed to doing that when you deny yourself the ability to speak, you actually start to grow. And it's a very beautiful thing. So that's something I did. I also decided that, I, of course, in terms of my food, in terms of my other disciplines, I tend to be reasonably disciplined in terms of how I live my life. And so, but I don't do it in a hard way on myself. I do it in the way of loving self-denial, and that's kind of how Dada would want it to be, rather than something that is hard and difficult. It should be loving, like a gift of self-denial to, the world from yourself. And so that's really how I see it. And it's a very beautiful. I like the way you put it, the gift of self-denial. So it suddenly seems like, it's something we need to do. Yeah. No, that's wonderful. I'm sure there were many other teachings, in a way, I would say, or many other things he said to you that
had an impact on you. Would you care to share some of those with us? Well, I think I learned some core things from Dada. Beyond just his whole persona was one of so much humility, love, compassion, kindness that one couldn't but learn. But I think to me, you just quoted a beautiful chapter of Gita, chapter 12, verses 13 to 20. It's all about bhakti. And I think he was the ultimate bhakt. He had total faith, total faith. He was always content. Whatever happened, he was always content. I never saw a moment when he was not content with anything. He was deeply, kind and, non-violent in the way he thought. His mind waves were very peaceful and non-violent and everything. He was kind of an embodiment of love. And I think that, how much can these things, each one of these things is an incredible gift of learning, right? Just to be a loving person, just to be compassionate, that to have faith, unshakable faith. He was always smiling. He was always kind to everyone. He was always concerned about other people. His own things, didn't seem to affect or worry him at all, ever. And that was an incredible learning from us. And he was so humble and kind always. My youngest daughter, is a poet, and she has been writing poetry since she was 10 years old. She wrote a book of poetry. Nice. And she said, I want Dada to bless the book of poetry and photographs before I give it to the publisher. Wow. So I said, okay, fine. So we took the book and we sent it to Krishna Didi and said, could Dada please just bless the book and tell us it's blessed, and we'll have it then tell my daughter it's blessed. So we didn't hear back for 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. It was a bit unusual. So I wrote back to Krishna Didi and said, look, we'd appreciate it if Dada could just touch it and just bless it. Yeah. And she said, no. Dada is reading every single poem. Wow. Nice. Dada wrote a foreword for my daughter's book. Oh my gosh. So my daughter's first book in life was blessed, truly blessed by Dada. And so, we've been we felt his incredible love, compassion, kindness to us, and thoughtfulness to everyone, whether it's a child or whether it's an older person or just incredibly kind person. Yeah. It is. That's impressive, though. Even on the fact that your daughter has been writing, and the fact that he read all the poems and he wrote the foreword for it, Yes. which is. Can you tell us the name of your daughter's book? Because I'm sure we would like to. Everyone would want to know. It's called Alone to Alone. Alone with a small a to alone with a big A. I'm going to make a note of it. No, I can go back and watch this and I can get the name. Okay. Wow. That's a very deep title too. Yeah, she's a very spiritual child. So they've all my daughters. I have 3 daughters, 22, 23, and 25. And one of the things we did with all of them is try and get them to have some spiritual grounding. So we told them, until you're 18 years old, you're not allowed to drive, vote, go to pub, and you're not allowed to do Vipassana meditation. And so when they were 18, all 3 of them, as a birthday present, rushed to Vipassana meditation. So, but why not Vipassana meditation? I'm not familiar with it, so why not? Meditation is we told them they can't do it, so they would be ultra excited to do it. It was a reverse psychology. Okay. It's a 10-day silent meditation. Oh, An wow. ancient Buddhist technique where you sit in silence for 10 days and you meditate. So it's a very beautiful technique. And so I think it's... so the youngest one, I think, also did that. And then she wrote this book. And Alone to Alone, I believe it's a very beautiful title because in a way we are all alone with a small a as we live our lives. But you move to the aloneness of being one with the universe. The whole oneness of the universe is also alone, but it's with a capital A. And so it's a very beautiful thing. So. Yeah. And Dada always had his way of touching every child's heart, that
Every child who Absolutely. met him, was truly blessed. Oh, wow. And Absolutely. I loved the cover of the book. It's absolutely beautiful. Wow. Yeah, Yeah, I it's think this is something we must all look into. Lovely. Oh my gosh, look at that. you see Dada's words there. I think they'll be there somewhere. Yeah, So beautiful. yeah, Yeah. So beautiful. Oh my goodness. It's something we must definitely look into. Yeah. Wow. So your children are truly blessed also to have been very on blessed. this Very path and to be connected spiritually, because I know religion sometimes is very confusing for the young, and spirituality is something that draws them all. yes. Yeah, Absolutely. and yeah, and when And you Dada have, was so clear about that. Dada yeah, was always very yeah, clear about that. That religions are all wonderful, but the root of that is spirituality. yes, All rivers leading to the same ocean, yeah, and focus on the ocean, not on the rivers. And so I yeah, think it's a yeah, very yeah, beautiful. yeah, yeah. And he somehow had his way of making each one of us feel like it's okay. You take your time. It's a journey. Because I remember telling him, I said, "What if I can't sit in silence?" And he said, "Then kirtan is the way for you." I Yes, mean, he made God so real and so approachable, more than anyone and anything else. And I think that was the best gift that I know I personally got from him, was the that's realization that God is here, God is now. You don't need to go, in search of God somewhere far off. absolutely, absolutely. Yeah, Because yeah, he was an embodiment of that faith that yeah. God is around us all the time, and everyone he touched, everything he did, Hmm. so loving. And Yeah, you see that God is really love, that energy of love that flows constantly, yeah, without expecting anything in return yeah. of any kind. Very Very true. like a mother's love, really. Very Yeah, beautiful yeah. thing. That was Yeah. a connection that was very dear to him, that of a Yes, mother and child. absolutely. Yeah, yeah. Bulle Shah very beautifully says, "Je rab milta nateyan dhoteyan, ta milta dadhuan machiyan." If you could find God by bathing in the rivers, then the Yes, fish and the frogs would have found him. yes, "Je rab milta jangal vele, ta milta gawa vachiyan." If you were to find God in the jungles, the cows and their calves would have found God by then. yes, yes, Je rab milita vich masiti ta milita cham chadiyan. So if God was to be found at the top of buildings or mosques, then the birds would have found him. yes, Bulle Shah rabu onanu milita jinadi niyata sachiya. God is found by those whose intentions are clear and who are yeah. very genuine. Yes. And Intentions are pure. Yeah, it's the beautiful. pure ones, yeah. So Beautiful. that's what Dada is, and that's what he did for us, is clear out all of the what should I say, the rituals and all of Yes, the yes, boundaries, yes. the bonds that tie us down. I also think that influenced by the Sikh Yeah, traditions, which got a lot of the rituals were reduced, yeah, and yeah, so more kirtan and more yeah, kind of much flatter structure. I yeah. think there was an influence of the Sikh traditions. I'm half Sikh, so Oh, I that's grew up, lovely. in a half Hindu, half Sikh family. That's So wonderful. kind of feel very close to the Yeah, traditions. Guru My Nan. mother's family is from Nabha, which is the neighboring town to Patiala, Okay. where Sadhu Vaswani worked and lived for many years. Oh, I So didn't know that. they're connected to that as well. Isn't it strange how we get connected to his angels, his blessed ones, and we Yes, don't even know it for a long time, and then suddenly one day you yes, meet your savior. yes. It's I mean, that's incredible. what he, yeah. Beautiful thing. To me, Dada is my savior, so Yes, I'm very grateful that I met him. And yes, yes, Guru Nanak Sahib definitely did clarify a lot of things for us, thankfully. yes. Yeah, yeah. Shiv, I cannot tell you how wonderful it has been speaking to you. The time we give to our speakers is sadly too short, but every program has its own format, its own protocol, its own ways. But I am really hoping that someday I will get to meet you and hear more and more about Dada from you and your experiences with him. Thank you And so much.
Seriously, I know, I think you're sitting at the airport right now, or somewhere Just outside. at the airport, yes. So how can we thank you for doing this? Because it's really wonderful. What Thank you you so much. shared with us today, it was, for me, very, very beautiful. Thank you. Moments I have not witnessed, but through your words, and I can imagine what it must have been. Thank you so So, much. It's very kind, really. Dada Sham. Thank you so much. Dadasham, heartfelt gratitude again, Shiv, Thank you. Of course, and not at all. safe travels. Thank you very much. Take care. Lots of Dadasham, love to everyone. Dada Sham. Dadasham. What a lovely conversation with our wonderful guest, Shiv Khemka. Shiv, I'm sure if you Google him, you will know all the credentials and all of that. I don't like to talk about those because I believe every human being is an individual, a wonderful soul, and I'm grateful that through this platform, through the Sadhu Vaswani Centre-Chennai, I have had the opportunity to meet such wonderful people. It's now time to invite Jawahar Bhaiya back on screen. Jawahar Bhaiya. Jawahar Bhaiya, please join us. I think there's a bit of a technical difficulty. Okay. प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था. अॼु असांजी भेण किरण मूरजानी, जेका न्यू जर्सी में रहंदी आहे, असां सां गॾु आहे, जेके असांखे पंहिंजा मिठा भॼन ॻाई ॿुधाईंदी. ऐं किरण खे मां सालनि खां सुञाणा. असांजे सेंटर में किरण ॻाईंदी आहे, असांजे कैंप्स में किरण ॻायो आहे. इट्स ऑलवेज नाइस टू सी यू. किरण, तव्हांजो माइक शायदि म्यूट ते आहे, त तव्हां प्लीज़ पंहिंजे माइक खे अनम्यूट कंदा. Dada Sham Kiran. Dada Sham Kiran. Nice to see you. So much. Nice to see you. You're welcome. Adi khushi thi taanke disi, and I'm so much blessed. Jay Kumar asanke approach kayo hai mukhe hin satsang mein bhag wathan jo participate karan jo mauko dino. I'm very blessed to see you also. तव्हांजो एतिरा सुठा वचन ॿुधी मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी. I listen to you. It's really amazing the way you speak. Dada ja experiences, everything is really amazing. Thank you so much. Yeah. Thank you, Kiran, for your very kind words. पर ॾिसो न, हाणे चाहे असां जेके सिंगर्स था अचनि, चाहे असांजा स्पीकर्स था अचनि, कंहिं न कंहिं तरीक़े सां दादा सां कनेक्ट थिया, है न? तव्हां जॾहिं दादा खे पहिरियों दफ़ो ॾिठो हूंदो या दादा जो दर्शन कयो हूंदो, तव्हांजे मन में कहिड़ो ख़्यालु हो? तव्हांखे कहिड़ी ॻाल्हि छिकियो? मतिलबु कुझु न कुझु त आहे जो छिके थो. मैग्नेट त आहिनि दादा, नो डाउट. पर अगरि मां तव्हांखां पुछां कि किरण, तव्हां दादा खे कहिड़े अखरनि में डिस्क्राइब कंदा, तव्हां कीअं डिस्क्राइब कंदा असांजे मिठे दादा खे? मां फर्स्ट टाइम हिकु दफ़ो पूना वई हुयसि. मां कंहिंसां गॾु वई हुयसि, त कोई फ्रेंड मूंखे वठी हलियो पूना. त पूना में वियसि त मूंखे दादा जो दर्शन कोन थियो फर्स्ट टाइम जॾहिं वियसि. त हुन खां पोइ मूंखे सॼी संगत सां मिलियसि, सभिनी सां मिलियसि, त ॾाढी ख़ुशी थी, पर दर्शन कोन मिलियो. वरी ॿिए दफ़े मां पाण वियसि पूना. मूंखे ॾाढी इच्छा हुई कि मां दादा सां मिलां. पोइ आख़िर मूंखे परियां खां दर्शन मिलिया दादा जा. पोइ मूंखे ईअं थियो कि मां दादा खां नाम वठां. पर मां घणी कोशिश कई कि मूंखे नाम दान ॾियनि दादा, पर मूंखे चांस न मिलियो, या मूंखे अॻियां मतिलबु नामदान जी शायदि उहो सॾु कोन थियो हो, त मूंखे नामदान कोन मिलियो. त वरी मां न्यू जर्सी अची वियसि. असीं न्यू जर्सी मूव थी वियासीं इंडिया खां. न्यू जर्सी में जीअं ई आयासीं त कैंप दादा जे सेंटर ते मूंखे अचण जो मौको मिलियो. त हुन खां पोइ मुंहिंजो अचण जो हर संडे मां सेंटर ते ईंदी हुअसि. बसि पोइ त मां दादा जी दीवानी थी वियसि. ऐं जॾहिं कैंप लॻंदियूं हुयूं त दादा त साम्हूं मुंहिंजे वेठा हूंदा हुआ, ऐं मां अॻियां अॻियां वेठी हूंदी हुयसि, भॼन ॻाईंदी हुयसि.
त दादा जा दर्शन त साम्हूं थींदा हुआ त मां त बस दादा जी दीवानी थी वियसि तॾहिं खां। बस वो त that is a history now. दादा में हो छिक तो हुई किरण, आसामा केट जेको बि गॾजंदो हो। Yes. हा हा। किरण, तव्हां असांखे केतिरा मिठा गीत ॻाए ॿुधायईं। सेंटर में प्रोग्राम्स में रेग्युलरली, असांजे सत्संगनि में, असांजे कैंप्स में, त छो न अॼु हींअर असांखे हिते हिकिड़ो को मिठो गीत ॻाए ॿुधायो। Sure. मां हिकु नूरी अंजलि जो गीत ॻायां थी, मूंखे ॾाढो वणंदो आहे। जी। तन में तंबूरो मोरे रसना राम, ब्यूटिफुल। हिकु हिकु सांस में सतनाम सतनाम। वेरी नाइस, ब्यूटिफुल। तन में तंबूरो मोरे रसना राम, हिकु हिकु सांस में सतनाम सतनाम। तन में तंबूरो मोरे रसना राम, तन में तंबूरो मोरे रसना राम, एक एक श्वास में सतनाम सतनाम, एक एक श्वास में सतनाम 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 सतनाम। संतार में मुंहिंजी कपुकार कपुकार, संतार में मुंहिंजी कपुकार कपुकार, मोरे राम बिना ॿियो को वीचार। तन में तंबूरो मोरे रसना राम, तन में तंबूरो मोरे रसना राम, एक एक सांस में सतनाम सतनाम, एक एक सांस में सतनाम 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 सतनाम। तन मेरा मन मेरा, तन मेरा माँ तन मेरा माँ, मन मेरा माँ मन मेरा माँ, तन मेरा मन मेरा माँ, तन मेरा माँ मन मेरा। राम बिना नहीं विश्रामा, राम बिना नहीं विश्रामा, तन में तंबूरो मोरे रसना राम, तन में तंबूरो मोरे रसना राम, एक एक सांस में सतनाम सतनाम, एक एक सांस में सतनाम
सतनाम वाहिगुरु 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 दादा श्याम 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 Beautiful. Beautiful, beautiful. I wish असांजी साउंड में वधीक क्लैरिटी हुजे हा त सब एंजॉय कन हा सभिन खे खबर पए हा कि तव्हांजी आवाज केतरी न मिठी आहे किरण तई जॾहिं बि ॻाईंदा आहियो दिल सां ॻाईंदा आहियो असीं सेंटर में हूंदा आहियूं त वेठा झूमंदा आहियूं ऐं मूंखे पक आहे अॼु बि के पंहिंजे घर में झूमंदा हूंदा पर असीं उन्हनि खे नथा ॾिसी सघूं माफ़ कजो कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज जे करे तव्हांखे आवाज पहुतो आहे न ना ही कॉमन शइ आहे ही सभिनि खे ख़बर आहे असांजो ऑनलाइन सेशन थींदा आहिनि केतिरा भेरा असांखे केतिरियूं इश्यूज़ थींदियूं आहिनि केतिरा भेरा मां ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे मुंहिंजी स्क्रीन ब्लैंक थी वञे मां गुम थी वञा ख़बर बि कोन पए सो इट हैपन्स सो इट्स ओके पर दादा जा केतिरा मिठा भॼन आहिनि तव्हांखे कहिड़ा कहिड़ा वणंदा आहिनि मूंखे त आहिनि घणा ई वणंदा आहिनि दादा जा हिकु त इहो मेन मुंहिंजो ॾाढो प्यारो भॼन आहे इन करे मां ही पहिरियों ॻायो जी ऐं ॿिया घणा ई आहिनि श्याम मुरारी हे बनवारी मोहे अपने ही रंग में रंग दे ब्यूटीफुल 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 तव्हांखे ख़बर आहे किरण जॾहिं कैंप में मूं हिकु दफ़ो इहो कीर्तन ॻायो हो मोहे अपने ही रंग में रंग दे त मां दादा सां लंच ते वेठी हुअसि पंहिंजो भॼन ॻाइण खां पहिरीं तॾहिं त दादा मूंखां पुछियो तूं छा ॻाईंदी त मूं चयो मोहे अपने ही रंग में रंग दे त दादा मूंखे चयो तूं हिकिड़ी ॿी लाइन ॻाइजांइ मोहे अपने ही रंग में रंग दे मोहे अपने ही संग में रख ले नौ थी वेंदे त this kirtan is very dear to my heart also right त हिकिड़ो ॿियो दादा जो जेको सुहिणो गीत आहे आऊं त तुंहिंजे आसरे त हुन में हिकिड़ी सिट अचे थी लहरूं लॻनि पियूं ॿेड़ी लुॾे आहीं मूंसां तूं भले ॿेड़ी ॿुॾे
Right. त ही जेका लाइन है ना, आहीं मूंसां तूं भले बेड़ी बुॾे, ही चवण में मूंखे हमेशा कुछ न कुछ मन में थींदो हो। मूं चयो साईंअ जो भरोसो कोन्हे, वरी कुछ कंदो ऐं मां न सही सघां, पोइ कीअं ॻाल्हि ठहंदी। त दादा सां वेठी हुअसि, एंड बिफोर आई कुड इवन टेल हिम माई फियर, त मूं अञा दादा खे इहो ई चयो कि दादा ही तव्हांजो गीत आहे न, आहीं मूंसां तूं भले बेड़ी बुॾे, त दादा राइटर चयो कि आहीं मूंसां तूं भले बेड़ी बुॾे, असीं त तरंदासीं। तंहिंखां पोइ इट बिकेम माई फेवरेट लाइन, बेड़ी वञे त वञे, असीं त तरंदासीं दादल सां गॾु। त दादा जी घणेई मिठी मिठी ॻाल्हियूं आहिनि। दादा जो असीं दादा खे यादि कयूं था त अलाए केतिरी यादगारियूं थियूं अचनि मन में, मेमोरीज, सो मेनी मेमोरीज। त छो न तई असांखे हिकिड़ो का इहो कीर्तन ई ॻाई ॿुधायो, या जेको बि तई ॻाइणु चाहियो, हिकिड़ो असांखे ॿियो गीत ॿुधायो। हिकु नंढो कीर्तन थी चवां। मैं जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। दया करो जी, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, दया करो जी, कृपा करो, दया करो, कृपा करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। द्वार पे आया भगत तुम्हारे, द्वार पे आया भगत तुम्हारे, अपनी नाम की गोद भंडारे, अपनी नाम की गोद भंडारे। मेरे पूरन होवे सब काम, सतगुरु दया करो। मेरे पूरन होवे सब काम, सतगुरु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दादल दया करो। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा, इस दिन पाऊं दर्शन तेरा, इस दिन पाऊं दर्शन तेरा। मुझे शरण मिल लो मेरे नाम, सतगुरु दया करो। मुझे शरण मिल लो मेरे राम, सतगुरु दया करो। दया करो जी, कृपा करो, दया करो, कृपा करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दादल दया करो। मन मंदिर की जोत जगा दो, मन मंदिर की जोत जगा दो। अपना मुझे प्रभु रूप दिखा दो, अपना मुझे प्रभु रूप दिखा दो। मुझे पहुंचाओ निज धाम, सतगुरु दया करो। मुझे पहुंचाओ निज धाम, सतगुरु दया करो। दया करो जी, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, दया करो जी, कृपा करो, दया करो, कृपा करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो।
मैं चलूं सदा तेरा नाम, दादल दया करो, सतगुरु दया करो, दादाजी दया करो, दादल दया करो, दादाश। It was so beautiful, Kiran. आता मूं त ही पहिरीं कोन ॿुधो आहे, तव्हां शायदि गायो कोन्हे असांजे सेंटर में. कोन ॻायो आहे. It is something new. Wonderful, wonderful. Jawar Bhaiya is back on screen. न्यू जर्सी किरण दीदी, किरण मूरजानी, असांजे ॿई किरण था ॾिसण अचनि मूंखे. किरण आहूजा और किरण मूरजानी, बोथ फ्रॉम न्यू जर्सी. किरण मूरजानी दीदी, अगर मां तव्हां खां वन लाइनर पुछां, तव्हां दादा जेके समर्पित आहियो, हिकु अखर में तव्हां दादा खे छा चवंदा? हिकु अखर में अगर तव्हांखे चवणो हुजे. What is Dada all about you? Dada is like my own Dada, my dad. Oh. I love him Dada? like my dad. दादा हमेशा He's चवंदा like आहिनि my न, dad. जी गुरुअ सां कोई न कोई हिकिड़ो रिश्तो रखणो आहे, भले दोस्त Right. जो, माता जो, पिता जो. yes. हाँ, दादा चवंदा हुआ कि पंहिंजे गुरु खे या मां सम्झो या पिता सम्झो त मुंहिंजो गुरु त दादा ई थियो, त दादा ई मुंहिंजो पिता साहिब मुंहिंजो दादा ई आहे. हिकु अहिड़ी यादगिरी जेकी हमेशह उथंदे वेहंदे तव्हांखे पहिरियों दादा जे बारे में तव्हांखे ख्यालु ईंदो, भई दादा तव्हांखे कीअं आसीस रही, या वन ऑफ द बेस्ट तव्हांजो ट्रेज़र मोमेंट दादा सां तव्हां अंदर में तव्हांखे ख्यालु रहंदो हमेशह, दादा जी निहार, दादा जी महर. यस, मुंहिंजो बेस्ट मोमेंट तॾहिं हो 2005 में जॾहिं मां कैंप में वेठी हुयसि ऐं दादा सभिनी खे चयो कि जेके बि नॉन वेज छॾींदा उन्हनि सां मां फोटो कढाईंदुसि. त मां पहिरीं नॉन वेज खाईंदी हुअसि, अंडो वग़ैरह खाईंदी हुअसि, बाक़ी ॿियो त कुझु कान. त तॾहिं मूं बि दिलि में ख़्यालु कयो कि मां छॾींदसि, मां सभु कुझु छॾींदसि. त दादा वटि वियसि, मां ऐं मुंहिंजो हस्बैंड ॿई गॾिजी वियासीं दादा वटि. दादा खे अची निमियासीं त दादा चयईं, किरण तूं खाईंदी हुईअ? चयमि दादा मूंखे माफ़ कजो, हाणे कोन खाईंदसि. मां अंडो खाईंदी हुअसि, पर हींअर माफ़ कजो, हाणे कोन खाईंदसि ऐं हींअर खां मां छॾियां थी. पोइ मूंखे विहारियऊं, हेठि विहारियऊं, पंहिंजे मां दादा जे चरणनि में वेठी हुयसि ऐं मूंखे हिते हथु घुमायऊं ऐं उहो ॾींहुं मां कॾहिं न भुलिजंदसि. मूंखे एतिरो प्यार ॾिनऊं, एतिरो प्यार सां मूंखे दृष्टि ॾिनऊं, प्यार जी दृष्टि ॾिनऊं ऐं मूंखे हथु घुमायऊं. त उहा मुंहिंजी सभिनी खां वधीक बेस्ट मोमेंट हुई, जेका मां कॾहिं भुलिजंदसि कान. ऐं तॾहिं मां दादा खे चयो, बसि दादा मूंखे इहा आसीस कयो, मां तव्हांजा भॼन ॻाईंदी रहां, तव्हांजे बसि चरणनि में रहां हमेशह. इहा ई मां दादा खे प्रार्थना कई ऐं दैट मोमेंट वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर मी. किरण दीदी, तव्हां जीअं दादा खे पंहिंजो पिता जो दर्जो ॾिनो आहे, त तीअं हेठां गुड्डी भाग्या करके असांजी भेण आहे, उन लिखियो आहे, आई विल कॉल दादा माय स्वीट हार्ट. त ॾिसो, जंहिंमहिल असां ॻाल्हायूं था पिया त तव्हां सचमुच ईअं सम्झो असां सिर्फ़ु टे न आहियूं, भई किरण मूरजानी न आहे, किरण आहूजा न आहे, जवाहर कोटवाणी न आहे, बट दादा इज़ देयर. दादा इन द फॉर्म ऑफ संगत. ऐं जेको हिन वक़्तु गुड्डी भाग्या या मिस्टर अर्जन लालवानी या केतिरा ई मिस्टर मूरजानी फ्रॉम सॼे विश्व मां लिटिल बिट से कमेंट्स आहिनि अचनि था, त ॾिसो इहो दादा जो रूप अथव. मां त जंहिं महिल पढ़ंदो आहियां न, त माण्हुनि खे लॻंदो आहे जवाहर सभिनी जा नाला थो खणे, त मां नाला दादा जे फॉर्म में खणंदो आहियां. जीअं दादा खे असां दादा श्याम चवंदा आहियूं, कृष्ण चवंदा आहियूं, झूलेलाल खे ओडेरो लाल चवंदा आहियूं, झूलेलाल चवंदा आहियूं, पल्ले वारो चवंदा आहियूं, चालीहे वारो चवंदा आहियूं, उदय चंद्र चवंदा आहियूं. त इहे ॾिसो, शालू दासवाणी आहे, त इहे कीअं दादा श्याम लिखनि था न, इन्हनि जो कहिड़ो न कहिड़ो
वर्ड्स में तव्हां डिफाइन था कयो बुढ़ी भाग्या थी करे दादा श्याम जो मतिलबु हिकिड़ो शब्द आहे बट उन में उन्हनि जी ब्रीफिंग जेकी आहे कोन उहो तव्हां था बयानु कयो किरण आहूजा या जेतिरा असां वटि स्पीकर ईंदा आहिनि त हींअर मूंखे लॻे थो किरण आहूजा दीदी वक़्तु थोरो तव्हां जेको मिस्टर शिव न ऑलरेडी असीं थोरो ॿाहिरि आया आहियूं हिकु प्रोटोकॉल खां शिव खेमका खे तव्हीं वक़्तु ॾेई छॾियो आहे एंड किरण मूरजानी दीदी आहे ॿई भॼन थिया आहिनि बट वक़्तु चङो थी वियो आहे मां सम्झां थो किरण मूरजानी दीदी तव्हांजे परिवार में सभु दादा सां मिलिया आहिनि हाँ सब मिलिया आहिनि यस इनफैक्ट 2 साल अॻु में मां पंहिंजे पिता साहिब खे वठी आई हुयसि ऐं मुंहिंजो भाउर 2 भाउर बि गॾु हुआ पूना में वियासीं ऐं मुंहिंजो हस्बैंड बि गॾु हो उन्हनि खे दादा श्याम सर उन्हनि खे दर्शन ॾियो उन्हनि जो दादा थैंक यू लक्ष्मण मुरजानी जी जी सर दादा श्याम यार मुंहिंजो भाउ जगदीश आहे थैंक यू मुंहिंजो भाउ बि आयो हो जगदीश लाल वेठो आहे एंड ही वाज आल्सो देयर त सभई गॾिजी करे वियासीं 2 साल अॻु में कृष्णा दीदी सां मिलियासीं हा ऐं पूना में सत्संग अटेंड कयो हो ऐं सत्संग कयोसीं गॾिजी करे राइट So I'm so sorry, Mr. Shiv Khemka जी ॻाल्हियूं एतिरियूं interesting तो हुयूं पर एतिरी मिठियूं हुयूं कि I could not control myself. So I'm very sorry I took your time. अॼु किरण मूरजानी जा ही पहिरीं स्पीकर सोलफुल भजन कम स्पीकर आहे हिननि जा 2 रूप ॾिठा असां फैमिली सां मिलियासीं एंड ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे एंड तव्हांजे मथां दादा जी आसीस हुजे एंड हींअर वेंदे वेंदे तव्हीं जस्ट दादा खे हिकु लाइन में जेको तव्हां हिकु वर्ड में ब्रीफ कयो त हिकु लाइन में हिकिड़ो सेंटेंस भॼन जो कहिड़ो गाईंदा हिकिड़ो ई सेंटेंस आख़िरी में हिकिड़ो ई सेंटेंस निज नंग है परवरदिगार ऐं बनहाणी आया गुनहगार पालिज नंग है परवरदिगार ऐं बनहाणी आया गुनहगार प्रभु इहो नंग पाल जाए मां तुंहिंजी गुनहगार आहियां मूंखे पंहिंजे पांद में रखजांइ दादल शाह मूंखे पंहिंजे पांद में रखजांइ इहो ई मुंहिंजी प्रार्थना आहे प्रभु दादल शाह खे केॾा हंबल आहे दीदी पाण असांखे तव्हांजी हिननि मिठड़ियुनि ॻाल्हियुनि में एॾे हंबलनेस में असां जेतिरा बि हंबल ॾिसंदा आहियूं न उन्हनि में दादा ई नज़र ईंदो आहे हाणे जीअं तव्हां एॾी हंबलनेस आहियो हो किरण आहूजा बि ॻाल्हाईंदी आहे असांजी दीदी त सभिनी में मूंखे दादा नज़र ईंदो आहे भई ही सिखिया किथां आहिनि त ही हिननि वटि हिकिड़ो ई असांजो गुरू आहे हिकिड़ो ई हुननि जो टीचर आहे हिकिड़ो ई हुननि जो माता पिता आहे जंहिंमां इहे सिखिया आहिनि इट इज़ दादा जवाहर भैया दादा ॾाढो सुठी तरह चवंदा न केतिरो मिठो चवंदा जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है कि हर शइ में जलवा तेरा हू बहू है त पाण वेठो आहे त ॾिसण त अचे थो तव्हांखे त हू बि सुठी ॻाल्हि आहे त मां चाहींदुसि दीदी किरण मूरजानी ऐं हिननि जे सॼे परिवार ते दादा जूं खोड़ खोड़ आसीस हुजनि ऐं जिधर तेरा जलवा उधर तू ही तू है त अचो हाणे इहो वक़्तु बणियो आहे हरे कृष्ण हरे राम जी धुन जो ऐं हुन खां तुरंत पोइ दादा जो उपदेश थींदो किरण मूरजानी फ्रॉम न्यू जर्सी ऑन बिहाफ ऑफ साधु वासवानी सेंटर चेन्नई असीं तव्हांखे चरण वंदन था कयूं ऐं तव्हांखे धन्यवाद था ॾियूं एंड दादा's blessings. Thank you so much. See you soon in the center, God willing. Dada Shyam. प्यारे भेनरूं प्यारा भाउरो अचो हिकु स्पीकर खां पोइ सोलफुल भॼन खां पोइ असांजो वक़्तु बणियो आहे जुड़ण सां ॿुधण सां प्यारे दादा जो उपदेश पहिरियों हरे कृष्ण हरे राम जी धुन बैक टीम मिस्टर प्रदीप सभु गॾिजी दादा जो उपदेश ॿुधंदासीं दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम 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 दादा श्याम
Krishna Hare Ram Dada Sham Dada Sham Dada Sham Dada Sham Dada Sham Hare Krishna Hare Ram Dada Sham Hare Krishna Hare Ram Dada Sham Hare Krishna Hare Ram Dada Sham. My friends, I am one of the many servants of the great Master, the beloved Master, whose name my lips are not worthy to lisp, Sadhu Vaswani. Greater, infinitely greater was he than my weak words may tell. One day they asked him, "What is your religion?" And he said, "I know of no religion higher than the religion of unity and love, higher than the religion of service and sacrifice. For him indeed to live was to serve, to live was to love, to live was to bear the burdens of others, to live was to share his all with all." One evening, I well remember, he found a beggar lying underneath a tree. The beggar's clothes were tattered and torn. His feet were covered with mud. Sadhu Vaswani asked for a bucket of water. As soon as the bucket of water was brought, with his own hands, this prince amongst men, he had but to lift up a finger, and hundreds of us would rush to find out what his wish was. With his own hands, he cleanses the body of the beggar and passes on to him his own shirt to wear. The beggar points to the cap on Sadhu Vaswani's head, and without the least hesitation, Sadhu Vaswani passed on the cap to the beggar, and on that occasion spoke words which I can never forget. Sadhu Vaswani said, "This shirt and this cap and everything that I have is a loan given to me." Mark that word, loan. It is a loan given to me to be passed on to those whose need is greater than mine. Everything that we have is a loan. It is not given to us absolutely. Otherwise we would be able to carry it with ourselves into the great beyond. When the call comes to us to move on into the great beyond, we are able to carry nothing with ourselves. Nothing belongs to us absolutely. Everything has been given to us as a loan to be passed on to those whose need is greater than ours. In these few simple words, I believe, is the secret of a new humanity, a new world order, a new civilization. My friends, there are so many people who say, "What can we do? We do not have the money, we do not have the energy, we do not have the time. Our resources are limited, what can we do?" So many people come to me, they say to me, "What can we do? We have no money, we have no resources with which to help." And I recall that 4-year-old child. Her name is Isis Johnson. This girl of 4 years old, she created a gigantic impression in her community when she was only 4 years old. One day she asked her grandmother, "Grandma, can we send the food that has been left over to Ethiopia?" And Grandma said, "No, my child, Ethiopia is so very far. Before the food reaches there, it will grow too stale for human consumption." But Isis was not the one to give up. This 4-year-old child asked the grandmother, she says, "Grandma, are there no hungry children in our own town?" And Grandma had to make the confession that there are many starving, many hungry children in our own town. Then Grandma says, "Isis, why can't we send the leftover food to the hungry children in our own town?" That is how it began. And this child of 4 kept on moving from door to door, asking her neighbors if they would donate food for hungry children in the town. From this came
that great foundation which is named after her, the Isis Johnson Foundation, which supplies so many things, thousands of items, including food, clothing, necessities of life, to thousands of people all over the United States. Isis Johnson today is 18 years old, and she says she wants to be a doctor so that she can be of help to as many as possible. She says again and again, it does not matter who you are. It does not matter from where you come. It does not matter whether you are rich or poor. It does not matter whether you are young or old. You can help. You can make a difference. All that is needed is to care. It is this caring spirit that is lacking in our society today. It is this caring spirit which urges every one of us to do the best we can to serve others. My friends, what is the way of service? What is the right way to serve? Serve silently. Serve silently. Do not serve by cries and clamor. In India for a long time, we have confounded work with noise. We do a little work, we create so much noise. We do a little service, there's so much of show and ostentation in our service. We do a little service, then after spending an anxious, sleepless night, we wake up in the morning and scan the newspaper if our little service has been noticed. This is not service. This is not service. This is the very death of service. I look forward to the day when we shall have in India bands of young men and women who, spewing away all that is false and fleeting, bands of young men and women who, renouncing all low ambitions, will dedicate themselves to the silent service of India's teeming multitudes. I sometimes shed tears as I think of the shadows that we run after. Name, fame, prominence, publicity, earthly greatness, popularity, these are all shadows. India needs the Shakti, India needs the strength of people who serve silently. Serve humbly, serve humbly, serve in a spirit of humility. Do not think that you are doing meherbani to those whom you seek to serve. Rather, it should be the other way around. We have received so many favors from the surrounding universe. We have received so many blessings from God. We carry a debt on our shoulders. This debt must be paid back by serving those that are less fortunate than we are, by serving the aged and the infirm, by serving the handicapped and the halt, by serving the forsaken and the forlorn, by serving the unwanted and the unloved, by serving the hopeless and the homeless ones. Serve with love in your heart. The poor are not apart from you. The poor and you are a part of the one great whole. The sense of identification with the poor is very, very necessary before I can go out and serve the people in the right way. Sense of identification. I and those whom I seek to serve are not apart from each other. We are parts of the great whole. They are a part of me, I am a part of them. In this spirit, if we go and serve the poor, we will be blessed. Our acts of service will be blessed, and those whom we serve will be blessed. My friends, I went to a shop several years ago. In this shop was a vending machine. The vending machine was out of order.
and on the vending machine they had written the words, "This machine taketh, it giveth not." This machine taketh, it giveth not. That is, if you put a slot in the, if you put a coin in the slot of the machine, nothing will come out of it. This machine taketh, it giveth not. Are we not like so many of us? Are we not like this machine? We keep on taking and taking and taking. We give nothing in return. Today, the nations are moving in a jungle of darkness. Today, wherever you turn, there is the passion for power. There is the lust for fame. There is the greed of gold. Today, humanity seems to be standing in unseen ruins. Today, humanity seems to have suffered a nervous breakdown. Today, Mother Humanity is shedding tears while her children are busy preparing instruments of death and destruction. Today, humanity is as an orphan in the night, crying for the light. Today, more than ever before, we need men, we need women, we need simple men, we need true men, we need humble men who will go and serve the poor silently, who will serve them with love and humility in their hearts, offering all their service at the lotus feet of the Lord. They will be among the saviors of humanity. They will be among the builders of a new world order, a new humanity, a new civilization. I thank you. प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ और तकलीफें एक तू ही मददगार, उठाए अंजलि के जन्मों के सारे भार। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम दादा, तेरा नाम हो रहा है। दादा तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। दादा श्याम। दादा श्याम, किरण दीदी, दादा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सच्ची ॻाल्हि आहे, सच्ची ॻाल्हि आहे। मूंखे हिकिड़े मिंट में तव्हां ॿुधायो, तव्हांजो इहो सफ़र जेको तव्हां कॾहिं सोचियो बि न हो, वर्चुअल दुनिया में लाइव कन्वर्सेशन में, यू आर ऑल द वे फ्रॉम न्यू जर्सी, वी आर इन पुणे एंड द प्रोग्राम होस्ट आर चेन्नई। या आई नो। एक्चुअली हाँ, ॾाढो इंटरेस्टिंग रहियो आहे, छो जो मूं कॾहिं एक्चुअली वर्चुअल इट्स नॉट माई फील्ड। सची तव्हांखे मां ॿुधायां, मूंखे हमेशह लॻंदो आहे हिक ॿिए सां भई माण्हू गॾिजे त हिकिड़ो पर्सनल थींदो आहे कनेक्शन।
मूंखे ऑनलाइन शॉपिंग बि कोन वणंदी आहे, जस्ट टू टेल यू अबाउट इट। त इमेजिन मां पंहिंजे घर में वेही करे दुनिया जी जुदा जुदा कुंडुनि मां केतिरनि सां गॾु आहियां। माय गॉड, आई कैन नॉट थैंक द ऑर्गेनाइज़र्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स, द चेन्नई सत्संग। It's just been such an amazing journey. ऐं जे मूं तव्हांखे पहिरीं चयो मुंहिंजी प्रमोशन थी, मूं कॾहिं सोचियो कोन कि आई विल बी प्रमोटेड टू दिस पॉइंट, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। हे छा त असांखे एक्सपीरियंस माण्हुनि असां सां शेयर कया आहिनि, दादा जे प्यारनि, छा त असांखे मिठी ॻाल्हियूं ॿुधायूं आहिनि। ऐं मूं पहिरीं बि चयो कि मूंखे लॻंदो कि मां दादा खे सुञाणा, बट हा मां सुञाणा दादा खे, बट हिकु ॾाढे पर्सनल लेवल ते, रुगो पंहिंजी हिकिड़ी नंढड़ी हू चइजे न, फ्रॉम जस्ट लाइक लिटिल from I should say like in a very different aspect। पर हाणे जेतिरी दादा जे प्यारनि जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि, आई एम amazed how little I knew of दादा। जीअं कोन तव्हांजे बैकग्राउंड में हिकिड़ो समुंड आहे, राइट, त दादा समुंड आहे, असीं हुनजो हिकिड़ो फुरो बि कोन आहियूं। ऐं मां असां कुएं खे दुनिया समझी वेठा exactly, and that's what it is। and मां तव्हांखे सच थी चवां, I cannot express my gratitude enough to all of the speakers, to the singers। केतिरा असां मिठा गीत ॿुधाइनि, केतिरा असांखे नया सिंगर्स गॾिया आहिनि हिन प्लेटफॉर्म ते, सभिनि जी एक्सपीरियंसिस ॿुधी, गीत ॿुधी, it has just been a whole different world for me, an eye opener, and I'm very very grateful। and जवाहर भैया, तव्हां केतिरा प्रोग्राम्स होस्ट कया आहिनि, my goodness, so many programs you've hosted, न रुगो चेन्नई लाइ, हाणे ताईं वॉशिंगटन DC लाइ, and I don't know तव्हां ॿियनि केतिरनि प्लेटफॉर्म्स ते कयो हूंदो। अगेन मां पंहिंजे हू न कुएं का मेंढक चवंदा आहियूं न, so I'm again like one of those। मूंखे हिन ऑनलाइन में तव्हांखे हिकु ॻाल्हि ॿुधायां, जस्ट हींअर जीअं ऑफलाइन प्रोग्राम चालू थिया, हा, त असांजी बिलेवेड दीदी कृष्ण कुमारी, चेन्नई वारनि प्यारी संगत उन्हनि खे इन्विटेशन ॾिनी चेन्नई अचण जे लाइ। त जी जी जी, जनवरी में दीदी उते हलिया, एंड वरी मुंहिंजो सौभाग्य हो त ऑनलाइन खां हटके असां उन्हनि जे चेन्नई जे हिकिड़े सुहिणे चिन्नप्पा हॉल ऑडिटोरियम में उते तमामु वॾी संगत उन्हनि जी जमा थी, एंड सभिनी दीदीअ जो मैसेज ॿुधो। उते मंजू निचानी दीदी हुया, प्रिया दीदी हुया, त एॾो त सुठो हुन आसीस मिली चेन्नई खे। ऐं उते चेन्नई में दीदी मिस्टर जयकुमार आहिनि जेके ऑन बिहाफ ऑफ चेन्नई सेंटर, ही इज़ द मैन ऑफ द मैच। त उते दीदी उन्हनि खे जयकुमार न चयो, उन्हनि खे चयूं यू आर राजकुमार। अच्छा, ओके, दैट्स नाइस। वेरी नाइस। हाणे बि बैक स्क्रीन जेके उन्हनि जी सॼी टीम आहे, राइट, मिस्टर ग्वालानी, ही इज़ द प्रेसिडेंट, एंड मिस्टर बिहारी आहूजा, ही इज़ द सेक्रेटरी, मिस्टर मुकेश खूबचंदानी, मां उन्हनि सां पर्सनली मिलियुसि, एंड मिस्टर बैरवानी ब्रदर्स, लक्ष्मण बैरवानी, हा, शक्ति दीदी, एंड शायदि मूंखे हिकु ॿ नाला विसरी था वञनि, मूंखे ध्यान में न आहिनि, बट मोर और लेस जेके बि चेन्नई सेंटर खे हिकु दफ़ो वरी धन्यवाद, छाकाणि त अलाए कहिड़ो दादा जो लिखियलु खेल आहे, जंहिंमें हिकु माला में न्यू जर्सी मां किरण थी अचे, पुणे मां जवाहर थो अचे, चेन्नई जा सभु मिली करे दादा जी जेकी एक्सटेंडेड फैमिली आहे, ही मिस्टर श्याम कुकरेजा आहिनि, एंड पुष्पा शाहानी आहिनि, मिस्टर अजीत खैरपुरी आहिनि फ्रॉम हांगकांग। ॾिसो न, ही हांगकांग जो आहे, पुष्पा शाहानी आहे, पप्पू देवनानी आहिनि, ॾिसो ऑल फ्रॉम द वर्ल्ड। भले हिन वक़्तु असांजे हिकु हिकु ॼणे जो कमेंट अचे वेठो, बट दादा जी एॾी हुननि जे मथां आसीस आहे। हिन चेन्नई सेंटर जे प्रोग्राम जे लाइ एॾी सुठी व्यूअरशिप हूंदी हुई, छाकाणि त ऑनलाइन जंहिं महिल घर में सभु वेठा हुया, त तव्हां चओ था ऑनलाइन न वणंदो हुयो, मां पाण हैरान थी वियुमि त भई ऑनलाइन जी दुनिया एक्चुअली असां जेको कुओं था सम्झूं, ऑनलाइन इज़ ओशन। हाणे हिन वक़्त ते किरण दीदी, तव्हांखे सॼे विश्व में किथे सिंगापुर में, किथे तव्हांजो मलेशिया में, पनामा में, हाणे पनामा में मिस्टर अशोक बख्शाणी आहिनि। जी 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 जी,
तव्हांखे ख़बर आहे अशोक बख्शाणी ही इज़ अ वेरी साइलेंट डिसाइपल. उन्हनि जी कोमल भाभी आहे असांजी जेकी, मां हुन सां मिलियो न आहियां बट ऑनलाइन मिलियो आहियां. त ईअं लॻंदो आहे मां हुननि खे सुञाणा. निशा शिवदासानी इज़ देयर, त शोभा बुधरानी जेके सिंगापुर जा आहिनि. जी 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 जी. त ही दादा जा अहिड़ा अनोखा आहिनि. ही असांजी रोशनी समतानी हिकिड़ो अहिड़ो नालो आहे, मां सम्झां थो उन्हनि खे मां हमेशह जॾहिं बि प्रोग्राम चालू थींदो आहे त मूंखे इहा रोशनी भेण ॾिसणी ईंदी आहे. त एॾियूं इन्हनि जी मथां आसीसूं आहिनि. इहे दादा जो रूप आहिनि. इन्हनि जे बग़ैर ॾिसो असांखे छा लॻंदो आहे भई असां ॻाल्हायूं था इन जे करे असां सुठा आहियूं, पर तव्हां बिलीव न कंदा दीदी, जॾहिं मां कुर्सीअ ते वेहंदो आहियां मां कॾहिं बि पेपर वर्क कयो ई न आहे. हिन 20 महीननि में मूंखे जस्ट दादा सिमरन कंदो आहियां. जस्ट सिमरन खां पोइ मूंखे हुन स्पीकर में अचानक ई दादा जो ख़्यालु ईंदो आहे. अलाए छा मूंखे सुवाल ईंदा आहिनि, सभु दादा कराईंदा आहिनि. मूंखां केतिरा ॼणा पहिरियों पुछंदा आहिनि भई तव्हीं असां खां छा पुछंदा. त मूंखे पाण खे ख़बर न हूंदी आहे, त मां हुननि खे चवंदो आहियां भाऊ तव्हां दादा तव्हां कीअं छिके वरितो, कीअं दादा तव्हांजे लाइ छा आहिनि. इहे बेसिक क्वेश्चन्स में उन्हनि जी जेकी श्रद्धा थी अचे दादा जे प्रति, उन श्रद्धा ऐं उन कंटेंट खे तव्हां ॾिसो त तव्हांखे ईअं लॻंदो किरण दीदी ऐं मां असां कुझु बि न आहियूं दादा जे साम्हूं. जेके इहे ॿिया असां ॾिसूं असीं न रुगो दादा जे साम्हूं, पर जेका असांजी संगत आहे असांखे त रुगो भई इट्स जस्ट अ फेस की भई हुननि जे दिलि जी ॻाल्हियूं ॿियनि सां शेयर करण लाइ असांजो रुगो हिकिड़ो फेस, हिकिड़ी आवाज़ आहे बसि. एक्चुअली ॿियो कुझु कोन्हे. जीअं तव्हां चयो की तव्हीं रुगो बेसिक सवाल पुछंदा आहियो, त सेम मां बि चवंदी आहियां. मूंखां पुछंदा आहिनि व्हाट आर यू गोइंग टू आस्क मी. मां चवंदा एक्चुअली नथिंग, ओनली हाउ डिड यू मीट दादा एंड दैट्स इट. तंहिंखां पोइ जेको बि तव्हांजे मन में अचे. एंड इट्स अमेज़िंग जवाहर भैया, केतिरी ॻाल्हियूं अंदरि आहिनि दिलियुनि में. अञा त असांखे टाइम नथो मिले. असीं 20-25 मिंट में छा ॻाल्हायूं दादा जे बारे में. What can we say? प्रिया आसनानी शुक्राना थी करे भई. प्रिया आसनानी असीं भेण प्रिया आसनानी उन्हनि खे असीं ग्रेटफुल आहियूं. तव्हांखे ॾिसो असां कंहिंखां बि पुछूं न विश्व में शुक्राना त चवंदो दादा, हम्बलनेस दादा, ह्यूमिलिटी दादा, इवन जेके मैजिकल स्माइल दादा, कृष्ण जो रूप दादा. त सचमुच उहे अनसंग असांजा सभु कुझु आहिनि, हीरो आहिनि असांजा. एंड उन्हनि जी प्रेज़ेंस असांखे असांजे बिलवेड दीदीअ में नज़र थी अचे. थैंक्स टू साधु वासवानी मिशन. एंड उन्हनि एॾो असांखे प्रोत्साहन ॾिनो. छाकाणि त कंहिं महिल मिशन जा जेके असांजा भाउर भेनरूं आहिनि सभई, उन्हनि जो ईअं चवणु हूंदो इवन कॾहिं कॾहिं असांखे बि ख़बर न आहे त भई एॾा स्पीकर लिकियल वेठा आहिनि जेके दादा खे उन्हनि जे दिलि जे दॿली में दादा जूं ॻाल्हियूं आहिनि. ऐं हींअर हिकु दफ़ो मां वरी ॿुधायां, सभ खां पहिरियों साधु वासवानी मिशन, उन खां पोइ जेको पहिरियों सेंटर खुलियो दैट इज़ इन कोलाबा, जंहिंजा हींअर 30 मार्च बुधर जे ॾींहुं ऑन वेनसडे 70 साल पूरा था थियनि. ऐं उन्हनि जो ॿियो सेंटर आहे दैट इज़ बांद्रा सेंटर, जेके असांजी पूनम मलानी दीदी आहिनि, जय मोतियानी ब्रदर्स आहिनि, रेशमा मीरचंदानी आहिनि, एंड केतिरा ई ॿिया मुंबई जा साधु वासवानी मिशन जा आहिनि. ऐं हींअर ई उन्हनि हिकिड़ो वॾो रोड आहे जेको दादा JP वासवाणी जे नाले सां समर्पित कयो आहे. दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड सेवास. त ही असां हिन सेंटर खे ॾिठोसीं, तव्हांजे न्यू जर्सी सेंटर्स खे ॾिठोसीं, मिस्टर अशोक लालवाणी आहिनि, एंड केतिरा ई सेंटर्स आहिनि. मूंखे शोभा बुधरानी एंड किथां किथां मां ॾिठा, ऑल द पनामा आहिनि, तव्हांजो कैनेडा आहे. त अजीब ॻरियुनि त हिननि खे असां खोड़ वाधायूं था ॾियूं. ऐं सभिनी खे रिक्वेस्ट था कयूं त बुधर जे ॾींहुं 30 मार्च 6:30 नेशनल कॉलेज ऑडिटोरियम में शाम जो 6:30 बजे ही प्रोग्राम आहे. असांजी बिलवेड दीदी कृष्ण कुमारी, उन्हनि जो मैसेज आहे, काजल दीदी ऐं सरल जा soulful bhajan. And heartfelt gratitude to the Chennai Center for always organizing such beautiful programs with lovely singers, lovely speakers, and Jawahar Bhaiya, Sadhu Vaswani Center, Chennai je para, tankhe heartfelt gratitude jo ta itra sessions host kaya hin.
छो जो कुछ बि चइजे प्रोग्राम थियनि था त होस्टिंग खपे. It gives a structure, it gives a format. The केतिरा तव्हां सेशंस कया आहिनि, hats off to you, really, and it very beautifully and gracefully my done. salute to Kiran Didi from New Jersey on behalf of Sadhu Vaswani Centre-Chennai. And Kiran Ahuja ji, तव्हां बि ॾिसो न कंहिंखे ऊर्जो थो मिले न कुझु थो मिले, पर जेको ही असांजे अंदर में दादा अची करे वियनि था ऐं उहा जेकी सुकून ऐं हिकु दादा श्याम जो जेको शब्द आहे उहो असांजे अंदर ईअं मैजिक थो करे पियो. बिल्कुलु 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 मैजिक थो करे. त असांखे ॿिए जी थैंक्स जी ज़रूरत ई न पई आहे. या एंड जेको चवनि था न करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है, एक्चुअल में सच में ॾिठो वञे त ॻाल्हि हीअ ई आहे, ॿियो कुझु कोन्हे. असीं भले जे दादा जो बि उपदेश एतिरो सुहिणो हो न की असांखे हर जॻह पंहिंजो नालो खपे. कुझु नंढो कमु थींदो आहे, अख़बार माण्हू खोले ॾिसे की मूं शेवा कई त मुंहिंजो नालो आयो कोन आयो, त असीं एक्चुअली आहियूं अहिड़ा ई जीव, पर हुननि जी रहमत आहे जो असांखे वरी बि पाण सां वठी था हलनि, असांखे रस्तो था ॾेखारीनि. प्रदीप भाई तव्हां आयो पुठियां बैकग्राउंड में? पक हूंदा. प्रदीप भाई खां सवाइ असीं किथे हुजूं? हा जवाहर भैया. न हू कहीं. हा हा. ऑन बिहाफ ऑफ साधु वासवानी सेंटर चेन्नई, प्रदीप जोधानी साहिब जेके असांजा भाउर आहिनि. एंड दीदी ही इज सो पोलाइट एंड वेरी जेंटल जेस्चर, very simple and very down to earth. he is very calm. मतलब इन्हनि खे जेतिरो प्रेशर हूंदो आहे न, he never shows. Exactly. He never shows. And मतलब ही भले दादा सां मिलिया न आहिनि, पर किथे न किथे इन्हनि खे सपने में दादा आयल आहिनि. त इन्हनि खे बि पंहिंजे चेहरे ते मिठास सां पंहिंजे कम खे अंजाम ॾींदा आहिनि. त चेन्नई वारा जॾहिं पुछनि पिया असांखे कहिड़ा कहिड़ा ऑप्शन आहिनि, त असांखे जेको पहिरियों ऑप्शन हूंदा, वरी उन खां पोइ साथी जेके जुड़िया, त उन मां पोइ असांजो प्रदीप जुड़ियो आहे. त अॼु ॾींहं ताईं हिन आख़िरी एपिसोड सां असां गॾु रहियो आहे. प्रदीप, साधु वासवानी सेंटर चेन्नई तव्हांखे धन्यवाद थो ॾे. दादा जूं खोड़ खोड़ आसीसूं. एंड कॾहिं बि तव्हां पूना अचो त वी आर देयर. एंड मिशन में तव्हांखे ॿुधाए छॾां, हींअर 2 अप्रैल ते प्यारे मिठड़े दादा जी समाधि, पावन समाधि, उनजो पावन शुभ आरंभ, उनजो भूमि पूजन थी रहियो आहे. पंहिंजे वॾा वॾा जेके दादा खे मञींदड़ ऐं सॼे विश्व में उतां परियां परियां हिते माण्हू उन ॾींहुं हाज़िर थींदा. सुबुह शाम कीर्तन भॼन चालू थींदो. उहो सेशन आहे. त जीअं शिरडी जा साईं बाबा आहिनि, तीअं हाणे पुणे जा दादा थी विया आहिनि, सभिनी जा मिठड़ा दादा. त पुणे पुण्य भूमि इज़ नोन फॉर साधु वासवानी मिशन. त हिकु दफ़ो वरी पुणे जा दादा न जवाहर भैया, दादा जो पूनो आहे न. हा, पुणे नगरी जेकी आहे पावन नगरी, त उहा ॾिसो संत तुकाराम जी नगरी आहे, महाराष्ट्र ज्ञानेश्वर जी नगरी आहे. त पूनो असांजे दादल जी आहे. असांजे हुनमें दादा हींअर असांजा शामिल आहिनि. असां उन्हनि जूं अद्भुत अननोन ॻाल्हियूं, उन्हनि जा मैजिक्स असां ॾिठा आहिनि. सो हिकु दफ़ो असांजा मर्यादा जेकी आहे साधु वासवानी मिशन जी, उनखे धन्यवाद, जिन हमेशह वक़्तु ॿियो असांखे गाइड कयो, असांखे आसीस कई. एंड बैकग्राउंड में केतिरनि ॼणनि जा नाला हिन वक़्तु असां खणूं न खणूं ध्यान में नथो अचे, बट जेके बि आहिनि साधु वासवानी सेंटर चेन्नई जे पारां हिकु हिकु ॼणे जे कमल चरण ते असां सर था झुकायूं. जेतिरा असांजा व्यूअर्स आहिनि, जिन जे रूप में असां उन्हनि जा रिमार्क्स, उन्हनि जा कमेंट्स पढ़ियासीं, उन्हनि जूं आसीसूं ॿुधियूंसीं. सो इट्स अ रेयर एंड वेरी स्वीट एक्सपीरियंस. एंड ही मिस्टर नानक सचदेव आहिनि. एंड ॾिसो ही जेके आसीस था करनि, त ही दादा, असांखे लॻंदो आहे दादा हेॾा आसीस करनि. त मां चवंदुमि मोट में दादा इन्हनि ते ई पाण आसीस करनि, नानक भाऊ ते. एंड जेके चेन्नई जी जेकी टीम आहे, मां त पर्सनली उते वियुमि दीदी, त दे आर वेरी गुड होस्ट. एंड ॿिया बि सेंटर्स आहिनि. हिकु हेल्दी रेस कॉम्पिटिशन चालू आहे. ऐं मां चाहींदो आहियां हिकु सुठियुनि ॻाल्हियुनि जी हिक ॿिए मां प्रेरणा मिली करे उन मां असां कुझु सिखूं. त हिन 20 महीने में
ऑनलाइन ते दीदी असां एॾो कुझु सिखियासीं, असांखे छा लॻंदो आहे असां ई ख़ाली हंबल आहियूं। जेको किरण दीदी ॻाल्हाए थी उहा उन खां मिठो केरु न ॻाल्हाए सघंदो आहे। जवाहर जेको स्क्रीन ते थो ॻाल्हाए न मिठो केरु न थी सघंदो आहे। बट असां उहे मेंढक आहियूं जेके हिकिड़े कुएं में हूंदा आहियूं। एंड दादा इज़ अ लव ओशन, हिकु समुंड में अहिड़ा असांखे रूप ॾेखारियऊं त असां हैरान थी वियासीं। त सचमुच उन्हनि स्पीकर्स खे, सोलफुल भॼन ॻाइण वारनि खे, ऐं जिन शेवाऊं ॾींदियूं आहिनि, जेके मां हाणे ॿुधायोमांव तव्हांखे, केतिरा ई नाला आहिनि जिन जो असां दादा जो नालो खणंदा आहियूं त उन्हनि अधु राति जो बि असांजे उन कम में असांखे उन सफलता आणे ॾिनी आहे। हुन कम में कॾहिं कॾहिं उन्हनि उजूरो बि न वरितो आहे, न पैसो पाणी वरितो अथऊं। निष्काम शेवाऊं आहिनि उन्हनि जूं बैकग्राउंड में। त अशोक बख्शाणी इज़ वन ऑफ देम। जवाहर भैया, दादा जा दीवाना केतिरा वेठा आहिनि असांखे शायदि अञा अंदाज़ो कोन्हे। दादा जे प्यार ऐं सिक जे सदके माण्हू अची जमा था थियनि। उन साईंअ जी रहमत आहे जो ही सभु कम थियनि वेठा, न त असीं आहियूं छा, है न, आहियूं छा। इनफैक्ट माई हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू द संगत and apologies for all the times, for all the blunders, the silliness, the sometimes very I don't even know what to say. घणी भुलूं थींदियूं भुल आहिनि, चुक माफ़, भुल चुक माफ़, please. जाने अनजाने Yes. में जेकी बि भुल चुक थी आहे माफ़। yes. मां एक्चुअली ॾाढी कंफर्टेबल थी वेंदी आहियां जॾहिं मां हिन प्लेटफॉर्म ते ईंदी आहियां। मूंखे लॻंदो आहे पंहिंजा ई आहिनि। तव्हां ॾिठो हूंदो केतिरा भेरा, ख़ासि करे जॾहिं सीमा असांजी ईंदी आहे रामचंदानी, हुन सां गॾु हिकिड़ो अजीब ई रिलेशनशिप आहे मुंहिंजो। त मूंखे विसरी वेंदो आहे कि आई एम ऑन ए वेरी फॉर्मल प्लेटफॉर्म, ऐं इन करे विसरंदो आहे छो जो सभु पंहिंजा आहिनि। ऐं मूंखे लॻंदो आहे मां पंहिंजी फैमिली सां वेठी आहियां, त का फॉर्मेलिटी कोन्हे। ऐं सभिनि असांखे एतिरो दिलि सां एक्सेप्ट कयो आहे पंहिंजे घरनि में, असांखे असांजा प्रोग्राम्स ॾिसंदा आहिनि। So very grateful to all of you, and once again my sincerest apologies if I've stepped out of line or out of bounds at any point, and thank you again. दीदी हिकु वन लाइनर तव्हां कोई भॼन ॿुधायो न दादा जो। तव्हां बुले शाह जेकी आहे मस्तु तव्हांजी इहा जेकी भाषा आहे न, लिखण वारनि जी मस्तु मस्तु ॿुधाईंदा दीदी। हिकिड़ो दादा जे लाइ तव्हीं हिकु सेंटेंस कोई बि भॼन जो। मुंहिंजो एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट भॼन दादा सां आओ त हुब में हलूं तूं ऐं मां, विच बेड़ीअ मिलूं तूं ऐं मां, न की मथुरा न की काशी, हलूं जित जोत अविनासी, तूं ऐं मां। निमा शाम आई आहे न sorry, you know, the lines नदियूं यादि अचनि, but that is one of my very favorite. सावित्री भेण खे दादा जूं खोड़ खोड़ आसीसूं। ॾिसो हाणे केतिरा ॼणा नाला अचनि वेठा। हाणे ही प्रदीप भाई बि देरि सां सभिनी जा नाला अचानक थो ॾेखारे, मां त जल्दी ॾेखारियो थो हुननि खे। अॼु चाहे आख़िरी राणी भेण कुकरेजा। त हाणे हिन समुंड खे ॾिसी रहिया आहियूं, हिन पुठियां बैकग्राउंड में अजीत खेरपुरी तव्हांखे दादा श्याम चई रहिया आहिनि। त दादा जेके हिकु प्यार जो समुंड आहिनि, एंड दादा स्पिरिचुअल गुरु आहिनि। एंड दादा चवंदा आहिनि टर्न टू गॉड। रोज़ 15 मिंट शांति में प्रैक्टिस कयो एंड टर्न टू गॉड। कहिड़ो न कहिड़ो नातो प्रभु सां जोड़ियो। हाणे दादा जूं एतिरियूं सिखियाऊं आहिनि दीदी, एतिरियूं सिखियाऊं आहिनि। त मोमेंट ऑफ काम हूंदो आहे 2 अगस्त ते, 5 नवंबर ते मीटलेस डे हूंदो आहे। त एॾा वॾा वॾा उद्देश्य पर्पज़ आहिनि दादा जा। ऐं उन्हनि जो लिखियलु अंजलि हुजे या वॾे गुरुदेव जो लिखियलु नूरी हुजे, नूरी ग्रंथ, त इहे आम माण्हुनि ताईं पहुचणु ऐं उन्हनि जूं शिक्षाऊं पहुचणु तमामु ज़रूरी आहे। त हिकु दफ़ो वरी विश्व में जेतिरा ॼणा बि असां सां जुड़िया, साधु वासवानी मिशन खे पहिरियों धन्यवाद था ॾियूं, बैक टीम खे था ॾियूं, चेन्नई खे था ॾियूं, ऐं संगत खे था ॾियूं, किरण आहूजा भेण खे था ॾियूं, ऐं जवाहर भैया खे था ॾियूं। न बसि दीदी मां बसि हाणे मूंखे त मतिलबु मां ॿुधायां न, मां वेंदो आहियां। हाणे ॾिसो चतुर टहलियाणी साहिबु आहिनि, त ईअं ई मां जस्ट वेठो हूंदो आहियां, दादा जो सिमरन कंदो आहियां, बसि हलंदो रहंदो आहे मुंहिंजो प्रोग्राम। त हिकु दफ़ो वरी काई बि भुल चुक हुजे त माफ़। एंड सभिनी खे न्योता था ॾियूं 2 तारीख़ जे लाइ बि
एंड उन खां पोइ बि मिशन में, चेन्नई में, जिते बि तव्हां सेंटर्स में ज्वाइन थी सघंदव, त दादा जो इहो 20 महीननि में चेन्नई सेंटर जे पारां मां जेतिरो बि असां सिखिया आहियूं, उन मां काई बि हिकु एपिसोड जी तुक खणी करे दादा जी असां पंहिंजे एक्सटेंडेड परिवार सां मिलंदा रहूं, सिमरन दादा जो कंदा रहूं ऐं सॼे समाज सां, सॼे विश्व सां उन सच्चाई सां, अनकंडीशनल लव सां हलंदा अचूं। इन ई शब्दनि सां वञण जी इजाज़त घुरंदासीं तव्हां खां, छाकाणि त ही जेको वञण जो वक़्तु आहे, इहो विराम आहे हिकु नई शुरूआत जो, जी अंत जी न आहे, बिल्कुलु बट बिल्कुलु इट्स द बिल्कुलु बिगिनिंग बिल्कुलु ऑफ न्यू चैप्टर। हे हिकिड़ो चैप्टर, हिकु एपिसोड असां पूरो था कयूं एंड हाँ उते विराम ॾियणु ज़रूरी आहे, त हिकु ब्रेक थींदी आहे, त थी थो सघे त ॿिए कंहिं ब्रेक खां पोइ वरी नए विराम खां पोइ हिकु नई किरण ऐं हिकु नओ जवाहर, नओ एंकर ऐं हिकु नए रूप में ॿियो कुझु ज़रूरु रूप बदिलजंदा वेंदा आहिनि एंड दादा जा ई रूप आहिनि सभु। दादा असांजे अंदर में वेहे थो एंड मूंखे अॼु ख़बर न हुई दीदी तव्हां सां ही एपिसोड पाण गॾिजी करे कंदासीं, जी जी मुंहिंजे लाइ बि हिकु सरप्राइज़ तमामु हो। सुठी ॻाल्हि आहे जेको पहिरियों दफ़ो असां जेकी शेयरिंग था कयूं जी उहा पर्टिकुलर तव्हां ऐं मां पंहिंजे लेखे सेम ई थी लॻे, सिर्फ़ु ॿिन्ही जा वर्ड्स ब्रीफिंग अलॻि आहे, पर मुद्दो उहो ई आहे, मक़सदु उहो ई आहे, प्यारे दादा जे लाइ। जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु। मां तव्हांखे बुले शाह जे इन ई कलाम जी हिकिड़ी ॿी लाइन ॿुधाइणु चाहींदसि, जेका आई थिंक दादा बि साॻी ॻाल्हि था चवनि। घरे गुआची चीज़ ढंढोरा शहर विच। जेका शइ तव्हां घर में विञाई हुनखे तव्हां ॻोल्हण निकिता आहियो सॼे शहर में। घरे गुआची चीज़ ढंढोरा शहर विच, फर्क नहीं दिसदा तैनू अपने गैर विच। कहे सियाणे दिल है खाना रब दा, जे लभे ते यार खजाना लभदा। दिल आहे जिते असांजो साईं वेठो आहे, साईं मिलियो त तव्हांखे खज़ानो मिलियो। इन ई लाइन सां बुले शाह जे इन्हनि अखरनि सां मां बि आई वुड लाइक टू टेक लीव। थैंक यू एंड थैंक यू थैंक यू। असांजा व्यूअर्स, दादा श्याम असांजी संगत जिते बि आहे, तमामु तव्हीं जिते बि हुजो, मस्तु हुजो, तंदुरुस्त हुजो, सुरक्षित हुजो। तव्हां सभई दादा जी खोड़ खोड़ सभिनी ते आसीसूं। दादा श्याम, दादा Dada श्याम। Shah. Till we meet again.